कर्नाटक बीजेपी के सदर बीवाई विजेंद्रा ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के अयोध्या में राम मंदिर की तकदीस में शिरकत की दावत को मुस्तरद करने के फैसले से हैरान नहीं हैं। कांग्रेस के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए विजेंद्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही राम मंदिर के खिलाफ है। बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले से हैरान नहीं है। उनकी नीयत पहले दिन से बिल्कुल साफ है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया गया तो अगले ही दिन बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों को उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने बरतरफ कर दिया था। हर मौके पर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि वो राम जन्मभूमि तहरीक के खिलाफ है। कांग्रेस ने कभी राम को भगवान माना ही नहीं। विजेंद्रा ने ये अंदेशा भी जाहिर किया कि रियासती हुकूमत 22 जनवरी को कर्नाटक के मंदिरों में खुसूसी पूजा के फैसले को भी वापस ले सकती है। दावतनामे के बावजूद कांग्रेस के शिरकत से इनकार साफ जाहिर करता है कि वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के इंतखाबी नतायज से नाराज़ हैं। उन्हें ये एहसास हो गया है कि वो मरकज़ में इक़्तिदार में नहीं आने वाले हैं। उन्हें ये भी मालूम हो गया है कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दोबारा इक़्तिदार में आकर तारीख रकम करने वाले हैं। जनता पार्टी is not surprised by the decision of the Congress party. Congress party's intention is pretty clear from the day one. In the year 92 also, 1992, when Babri Masjid was demolished, next day, 5 state governments, BJP governments were dismissed by then Congress government. So on every occasion, Congress has proved that they are against Ram Janmabhoomi movement. And they never believed in Bhagwan Shri Ram also. So this is nothing new, and Bharatiya Janata Party is not surprised by this Congress party's decision, and will not be surprised. And you will not be surprised if tomorrow, because state government has already issued a government order, GO, saying that on January 22nd, special puja will be performed in all the temples across Karnataka. We will not be surprised if they cancel that order also. Instead of getting invitation for January 22nd Ram Temple inauguration, the rejection of the Congress party, I mean, they're reluctant to attend this on this auspicious occasion. This clearly shows they're totally upset the way things is going on, especially after the outcome of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh state elections. Congress and INDA alliance is totally upset, and they have realized that they are not going to come back to power at center. And they also realized BJP and Narendra Modi is going to create a new history by coming back to power for third consecutive time. ಸರ್, ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಎಸಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ. ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ರಾಮನ ಕನಸು ನೆನಸಾಗಬೇಕು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂಥವ್ರು ಸೇರಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಲುವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಮ ವಿರೋಧಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ.